Hello all. So today we will be starting with a chapter one of the SPOM set D, that is part A. अब part A में क्या क्या डिस्कस करेंगे. So it's introduction to entrepreneurship and startups. अब इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही है. Let's see कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से क्या क्या चीजें मिलेगी. Because we will majorly talk about why we are studying, why all these things are there. So what are the learning outcomes, why we are studying this chapter? So first is to understand the different types and essential skills of entrepreneurship. कि कौन कौन सी डिफरेंट स्किल्स है जो देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन द एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो एक डिस्कस करेंगे. द सेकंड थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इज एक्सप्लोर द क्रिएटिव स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टअप फाउंडर्स. तो यही है कि क्या कौन कौन सी स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होगी, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में. थर्ड, एग्जामिन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम फॉस्टरिंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. तो वही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाउ डज स्टार्टअप्स हेल्प, एंड हाउ डू दे थिंक दैट वी आर हेल्पिंग, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे स्टार्टअप्स हेल्प करते हैं वो देखेंगे. फिर आ जाता है गेन इनसाइट्स इनटू द ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन द स्टार्टअप्स. ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है कि इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में कौन कौन से स्टार्टअप्स चल रहे हैं, और कौन कौन से स्टार्टअप्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे. नाउ the fourth thing would be understand the role of the Department of Promotion of Industrial and Internet, that is DPIT, in promoting entrepreneurship. तो वही है कि DPIT का क्या रोल है पूरी इस जर्नी में, कि DPIT क्या कर रही है. The last thing would be learn about the government initiatives aimed at promoting and funding startups. तो बहुत सॉर्टेड सा लर्निंग आउटकम है इस चीज से. चैप्टर वन को पढ़ने से क्या क्या चीजें मिलेगी. तो दिस आर सॉर्टेड 6 to 7 पॉइंट्स, और यही अपन पूरे लेक्चर में पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या चीजें वो लोग डिस्कस कर रहे हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये एक चार्ट आईसीआई की मॉड्यूल में पड़ा हुआ है, एंड दिस अ वेरी गुड चार्ट जो जिसमें पूरा समराइजेशन है कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वही है जो मैंने आगे डिस्कस किया, वही उसका चार्ट चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है. नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट 1.1 अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स. तो वही है कि क्या है क्या नहीं है. सो एंटरप्रेन्योरशिप एट इट्स कोर एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ड्राइव टू क्रिएट वैल्यू. नाउ व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन क्या है? कुछ भी नई चीज क्रिएट करना, दैट्स इनोवेशन. सो सॉर्टेड इनोवेशन वर्ड इज डन. नाउ अपने ऑडिट की जैसा टिक भी करते जाएंगे. सो इनोवेशन वर्ड इज डन. नाउ रिस्क टेकिंग. तो रिस्क टेकिंग क्या है? जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड. सिंपल सी बात. ये गणित एकदम बिठा के बैठ जाओ कि रिस्क जितना बड़ा उतना ज्यादा रिवॉर्ड. क्योंकि अल्टीमेटली रिस्क टेकिंग तो करना पड़ेगा ना. रिस्क के बिना हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग इट्स कंसिडर के भाई आरएफ, तो मतलब रिस्क फ्री रेट में तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ रिटर्न. सो रिस्क तो लेना लेना पड़ेगा. हाउ मच इट डिपेंड्स ऑन यू. सो रिस्क will always complement the reward. So that's the second point. And drive to create value. अब वैल्यू क्या हो सकती है वो हर चीज हर लोग के लिए अलग है. सो ड्राइव टू क्रिएट वैल्यू अगर आप देखो, तो किसी के लिए ऐसा है कि भाई किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो हेल्पफुल हो. किसी के लिए वैल्यू ऐसे है कि पैसा कमाओ. सो दैट्स व्हाट हमने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि कैश और हाँ, क्या कैश कमाने के दो रास्ते हैं. सो इट्स कैश और कैसे. सो इट्स अपॉन यू कि आपको ह्यूमन बन के यू वांट टू हेल्प ह्यूमैनिटी, या फिर ईगो बन के कुछ भी ऐसा बेचने लगो, दारू बेचो या फिर सिगरेट बेचो. धंधा तो वो भी है, समझ लो. धंधा तो सब सब चीज धंधा है, पैसा तो बनने ही वाला है. इट्स अपॉन यू, इट्स अपॉन योर इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको कौन सी वैल्यू क्रिएट करनी है. सो दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज. नाउ इन इट्स ब्रॉडर सेंस एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग एंड सीजिंग द अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर. तो वही है कि आइडेंटिफाई करो, क्रिएट करो, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है मार्केट में, उसको केटर करो और ऐसा छापो. So that's what this entire slide talks about. Moving forward, it is not merely about starting a company. Rather, it compasses a mindset. एक mindset है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कर लेगा. एक माइंडसेट चाहिए होता है कि भाई धंधा बनाना है, धंधा करना है तो धंधा बनाना है. दैट्स व्हाट caters the mindset of the things. Set of skills that individuals cultivate to bring novel ideas to the fruition. So ये चीज वो हो गई. Now entrepreneurial activity helps create new jobs. तो ये एक एक क्या क्या चीजें करेंगे हम पूरे लेक्चर में पूरे स्लाइड्स में यही चीज एक चैप्टर में यही डिस्कस किया है. तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि न्यू जॉब्स कैसे क्रिएट करते हैं, फॉस्टर्स इनोवेशन, ड्राइव्स मार्केट कॉम्पिटिशन, वर्सेस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एंड एनकरेजेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये एवरीवन नोज दिस थिंग्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेयर डज द टर्म एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम? एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया? सो द टर्म एंटरप्रेन्योर लाइकली कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर मस्त वर्ड है. एंटरप्रेन्योर मीनिंग टू स्टार्ट समथिंग. कुछ भी चालू करो, एंटरप्रेन्योर हो. कुछ भी ठेला ठेला लगाओ पानी पूरी की, पानी पूरी बेचो, कुछ भी करो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर. खत्म. नाउ रिचर्ड कैंटरटन, an 18th century Irish French economist, is widely credited with defining entrepreneurship and entrepreneurs as an economic force that drives development. सॉर्टेड वर्ड है, पता है. इकोनॉमिक फोर्स दैट ड्राइव्स डेवलपमेंट. एक इकोनॉमिक फोर्स है, मोमेंटम में ऐसी चीजें चलती रहती है, बट वंस यू अप्लाई द फोर्स ऐसे ही बढ़ जाती है. सो एंटरप्रेन्योर्स क्या है? दिस इज दे आर दिस फोर्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एकदम पुश बैक कर देता है, एंड इट जस्ट क्रिएट्स मोर एंड मोर वैल्यू इन द टर्म्स. दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योर वर्ड कम्स फ्रॉम. Now, as you explore entrepreneurship, you will find that for those with an entrepreneurial spirit, often nothing is more exciting than embarking on a new business venture.
कि जो धंधे में धंधा बना रहा है ना, उसको तो वही है कि भाई चूल वही मचती है कि भाई नया-नया कुछ ना कुछ खुलता रहे। द प्रेजेंट बेस्ट बेस्ट एग्जांपल इज़ अमन गुप्ता। उसने बोर्ड बनाया, नाउ ही वांट्स टू क्रिएट ऑफबिट। एंड अनदर एग्जांपल इज़ मास्टर्स यूनियन का एक पॉडकास्ट आया था शायद गो आईबीबो के फाउंडर के साथ। ही वाज़ अ वेरी सॉर्टेड पर्सन यार, उसने ऐसी-ऐसी कंपनीज़ बनाई जो ही वाज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड ही स्टार्टेड मेकिंग दोज़ सॉल्यूशंस फॉर दोज़ प्रॉब्लम्स एंड ही मेड अ significant amount of wealth. So that's what this thing is all about. Now, new entrepreneurial ventures promise excitement, the chance at success, and the opportunity to realize a new vision. वही है कि अमन गुप्ता बोर्ड में पैसा कमा तो लिया है, तो क्यों करना है ये सब चीजें? एक एक्साइटमेंट होती है, नई चीज करने में मजा तो आती है ना यार। आप अपने सीए कर रहे हैं, सीए खत्म हुआ, उसके बाद ऐसा कुछ नया करने की चूल तो चढ़ती है ना कि एमबीए करे या फिर सीएफए करे। सो वही है कि धंधे में भी वही चीज है कि नई नई चीजें करनी पड़ती है। नाउ व्हाइल ईच एंटरप्रेन्योर इज यूनिक, मैनी शेयर एटलीस्ट अ फ्यू कोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प देम सक्सेड। तो यही बात है कि भाई सब अलग है। शार्क टैंक्स के 5 जजेस भी ले लो, 5-10 जजेस जितने भी हैं। सबकी अगर आप पर्सनैलिटी देखो, सबने पैसा खूब बनाया, बट सबकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है। कोई जॉली है, कोई ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड, ही इज़ वेरी साइंटिफिक। वो बहुत अलग-अलग है, बट यू विल फाइंड समथिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के एक मोटा-मोटी पता चल जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंडिपेंडेंट, पैशनेट, विजनरीज़, इनोवेटर्स, रेजिलिएंट एंड टेनेशियस, तो ये तो सब होनी ही है सब में। नाउ startups and newly established companies or entrepreneurial ventures typically characterized by innovation, high growth potential, and a focus on developing and marketing unique products or services. ये वर्ड बहुत मस्त है, यूनिक। यूनिक क्यों होना चाहिए कि भाई जो बना रहा है वो तो बना के क्या करोगे? You have to create something unique. So that's the thing. Now, some of the core characteristics. Let's study what are the core characteristics of the startup. Now, first, पहला तो इनोवेशन तो होगा। इनोवेशन के बिना तो कुछ कर नहीं सकते। Startups come to life with new and creative solutions to existing problems एमिंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग यूनिक टू द मार्केट। वही चीज़ है, इनोवेशन के बिना तो स्टार्टअप है ही नहीं ना। वो तो फिर ट्रेडिशनल धंधा करो, खत्म बात। सेकंड, रिस्क एंड रिवॉर्ड। आगे हमने बात की कि व्हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड इज इंपॉर्टेंट। सो न्यू वेंचर ऑपरेट्स इन अ रिस्की एनवायरनमेंट वेयर मेनी फेल बट सक्सेसफुल वंस एक्सपीरियंस क्विक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सक्सेस। सो आई एम गाइडिंग स्टार्टअप्स या फिर इन्वेस्टर्स को भी कुछ बात होती रहती है हम लोगों के साथ। सो व्हाट आई सजेस्ट टू देम आल्सो कि भाई 100 स्टार्टअप्स हो रहे हैं ना, 99.99 फेल ही होने हैं। एक स्टार्टअप ऐसा होगा जो आपकी क्रिएट वेल्थ कर देगा जो 99% नहीं कर पाए। बट यू हैव टू स्टे सेफ, मतलब एज एन इन्वेस्टर यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन स्टार्टअप्स एट लीस्ट, बिकॉज़ वो एक थोड़ा बहुत रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होगा, बहुत लंबा खेल है। सो दैट्स द थिंग। नाउ थर्ड इज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। सो फाउंडर्स एंड टीम मेंबर्स ऑफ स्टार्टअप्स एम्ब्रेस एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, टेकिंग रिस्क्स एंड अडॉप्टिंग क्विकली टू ब्रिंग देयर विजन टू द रियलिटी। वही एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, एज आई सेड, एक माइंडसेट चाहिए होता है। दिस एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज अबाउट द माइंडसेट, कि माइंडसेट कैसा है आप लोगों का। So that's what this brings. Now, then comes the venture capital. Startups often seek funding from investors like venture capitalists or angel investors in exchange of a share of the company. वही है, ऐसा ही है, शार्क टैंक में भी देख रहे हैं, वेंचर वीसी फंड आते हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, टेक शेयर ऑफ द कंपनी और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ भी। दैट्स व्हाट द वेंचर कैपिटल इज अबाउट। नाउ लीन ऑपरेशन, स्टार्टअप्स फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डूइंग मोर विद फ्यूअर रिसोर्सेज। अब स्टार्टअप की टीम भी देखो ना, 2-5 जन होते हैं, एक ही बंदा सेल्स कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, एक ही बंदा रीच आउट कर रहा है लोगों को। सो लीन टीम होती है, दैट्स द थिंग कि स्टार्टअप तो होता है वही है ना कि भाई कुछ बड़ा नहीं है, एक छोटा सा सेटअप है, कोवर्किंग स्पेस में बैठे और वहीं से काम कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट दिस प्रोवाइड्स, दैट इज लीन ऑपरेशंस। Now, moving forward, तो क्या प्रोवाइड करता है? सो इट प्रोवाइड्स रैपिड ग्रोथ। सो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ग्रो रैपिडली, एक्सपांडिंग देयर ऑपरेशंस, एंटरिंग न्यू मार्केट्स एंड अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो वही है, रैपिड ग्रोथ मिलती है। कोई भी स्टार्टअप होगा, रैपिड ग्रोथ तो मिलेगी ना, वरना तो फिर ठीक है, वही करते रहो जो चल रहा है। फिर इकोसिस्टम सपोर्ट। तो स्टार्टअप्स थ्राइव इन सपोर्टिंग एनवायरनमेंट्स विद मेंटरशिप्स, नेटवर्किंग एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफन फाउंड इन इनोवेशन हब्स लाइक सिलिकॉन वैली। तो अगर आप देखोगे ना, कोई भी बड़ी चीज़ बन रही है ना, तो वो एक ग्रुप में बनती है। कोई आइसोलेटेड में कोई चीज़ बड़ी बना दे, वो बहुत रेयर होता है। इफ यू एवर सी कि भई एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल होते हैं, कम्युनिटी होती है, वही क्या चीज़ बड़ी बना सकते हैं। इफ यू हैव हर्ड अबाउट द पीपल माफिया इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग ऑफ इकोसिस्टम सपोर्ट, कि एक ही पेपल जो बनाया है उसमें से जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी को-फाउंडिंग टीम्स हैं, सबने अपने-अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं। किसी ने लिंक्डइन बनाया, कोई एलन मस्क का ये वो। इट वाज़ लाइक एन एंटायर इकोसिस्टम। तो वहीं से सब चीज़ें निकलने शुरू हो गई। नाउ द थर्ड थिंग वुड बी फेलियर एंड लर्निंग। सो फेलियर इज़ कॉमन, वो तो होना ही है ना यार, फेलियर नहीं होगा तो स्टार्टअप कैसे है? बट एंड स्टार्टअप्स लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ऑफन चेंजिंग द अप्रोच बिफोर फाइंडिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल फाइंड करने में, एक आईसीपी दैट इज़ आइडियल कस्टमर प्रेफरेंस फाइंड करने में वाट लग जाती है। तो देयर वाज़ एन एग्जांपल कि नायका ने अपना आइडियल कस्टमर प्रेफरेंस ढूँढने में 2 साल लगा दिए कि मेरा कस्टमर कौन है, एग्ज़ैक्टली कौन है मेरा कस्टमर, कि ये वुमन यहाँ पे रहनी चाहिए, इसकी इतनी डॉटर्स होनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो वो हमारे आइडियल कस्टमर है।
एंड दिस प्रोसेस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको फाइंड करने में ही वाटर लग जाती है कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, बट दैट्स व्हाट दिस प्रोसेस गेट्स टू यू नाउ. The fourth is exit strategy. Many startups plan for exits like being acquired, going public, providing returns for investors and founders. तो वो तो नहीं है ना यार, पैसे के लिए धंधा, आरओआई के लिए कोई भी पैसा डालता है, कोई भी सेवा करने के लिए कोई पैसा डालने वाला नहीं है. सो उनको एग्जिट तो चाहिए ना कहीं तो दे विल थिंक कि भाई हाँ मेरा पैसा कितना बन रहा है. फिर आ जाता है टेक्नोलॉजी फोकस. टेक्नोलॉजी फोकस तो होगा, स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी वाला नहीं है तो क्या क्या बना रहे हो सर. इट्स लाइक यूजिंग एडवांसमेंट इन एरियाज लाइक सॉफ्टवेयर, एआई, बायोटेक्नोलॉजी. उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सेस है, ये है, वो है. So it's like a very interesting thing of this thing. Now, culture, values, and leadership. Startups prioritize a dynamic and innovative culture, often emphasizing values like creativity and collaboration. तो startup में ऐसा कुछ नहीं है 9 to 5 आओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई. रात को 2 बजे काम कर, तुझे 5 बजे काम कर, करना भाई, तेरी मर्जी भाई, काम होना चाहिए, खत्म बात. वो फ्लेक्सिबिलिटी एक होती है कि भाई बना है भाई, जब बनाना है, जब काम करना है, बट डोंट गेट फिक्स्ड इनटू इट. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्टअप. बहुत थोड़े कुछ है नहीं, बट दिस इज मैं वही बता रहा हूँ दैट आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. कुछ ना कुछ एक-एक नया पॉइंट आता जाएगा एंड आपको भी मज़ा आएगा. देखो पढ़ना तो सबको है ही, बट ऐसे पढ़ लोगे तो ठीक है, मज़ा करके पढ़ पढ़ लोगे. बाकी इट्स वेरी सॉर्टेड नाउ. The dynamic nature of entrepreneurship and startups inject fresh ideas, technologies, and solutions, enhancing productivity and economic growth. Additionally, successful startups often lead to increased consumerism. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई अगर ज़ोमैटो, स्विगी आया, बुक माई शो आया, तो पहले लोग आलसी नहीं, बट वहाँ पे जाके कर लेते थे, बट अब लोग और ज़्यादा आलसी हो गए. भाई ज़ोमैटो कर लेना, खत्म. कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है. वो एट एन इंडिविजुअल लेवल वो खराब है, बट एट द सोसाइटी लेवल, एट इकोनॉमिक लेवल, इट्स अ वेरी गुड थिंग. मैं ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज़ अगर इंडिविजुअल लेवल ये कंज्यूमरिज्म बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज़ इट रन्स थ्रू द सेविंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है. वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस लोकल एंड ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स. सो दिस इज़ द थिंग. नाउ सम फेमस स्टार्टअप्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, बहुत अच्छे-अच्छे, स्पेसएक्स बहुत बढ़िया है, इलोन मस्क. स्ट्राइप इज़ वन ऑफ द गुड स्टार्टअप्स बिकॉज़ मेरा एक क्लाइंट था, क्लाइंट नहीं बट ही वाज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही वाज़ फ्रॉम कनाडा. उसने ही इज़ मेकिंग समथिंग कॉल्ड एज़ डांस प्लेस, एंड डांस प्लेस इज़ लाइक it's not confidential data, but he is just coming in India, and he is opening this sort of thing, and he was recognized by Stripe. So he was, मतलब वो जो अपना बुक माई शो है ना, उसके जैसा ही कमीशन मॉडल है उसका. बट वो है डांस प्लेसेस को बुक करने के लिए एंड एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए. सो उसको ही इज द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इन द स्ट्राइप इकोसिस्टम. दैट्स अ वेरी गुड पूरा इकोसिस्टम. स्पेसएक्स तो सबको पता ही है भाई, इलॉन भैया क्या क्या करते रहते हैं. फिर डीडी शूइंग, ठीक है, मुझे उतना नहीं पता उसके बारे में. फिर जूम. जूम हैव बीन बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप या फिर मीटिंग्स ऐप. फिर न्यू बैंक है. अब इंडियन स्टार्टअप्स में देख लो, पेटीएम ने क्या क्या धमाके मचाए थे 2016 में, तो पेटीएम ही यूज कर रहे थे सब. फिर बायजूस ले लो. अब तो बायजूस तो ठीक है, आया गया, क्या किया, बेच बेच के क्या, अनएथिकल सेलिंग, तो ये हो जाता है. अनएथिकल सेलिंग होनी है, व्हेन ग्रोथ इज रिक्वायर्ड. जब ग्रोथ आनी बंद हो जाते हैं ना, तब ये सब धंधे चालू हो ही जाते हैं. दैट्स हाउ द डायनामिक्स ऑफ द स्टार्टअप्स, और हाँ, दैट्स हाउ द डायनामिक्स ऑफ कंपनीज है. कि जब भी वो आईपीओ में जाता है, अब ग्रोथ कहाँ से लाए, सेल्स तो करना पड़ेगा, कहाँ से करे सेल्स, अनएथिकल प्रैक्टिस करो. तो दैट्स व्हाट हैपेंस. ओला भी सेम चीज़ है कि उन्होंने आईपीओ ला लिया, अब ग्रोथ कहाँ से लाए, बेचो. अनएथिकली सेलिंग करके जो है भी नहीं प्रोडक्ट में इतना यूटिलिटी, वो भी बेचना शुरू कर दो. जोमेटो इज अ गुड स्टार्टअप. जोमेटो, दीपेंद्र गोयल, एंड इज अ ग्रेट फाउंडर आई गेस. एंड देन फ्लिपकार्ट इंडिया. तो ये इन सब की स्टोरीज बाद में है ही कि भाई क्या-क्या उन लोगों ने कैसे ये सब चीज़ें बनाई. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व कैसे हुआ, हर एक चीज़ व्हाई इट वाज़ सो मच रिलेवेंट के इस फेज़ से ही क्यों ग्रो होनी रिलेवेंट थी वो चीज़. नाउ द अर्ली स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रिवॉल्व्ड अराउंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एंशिएंट ट्राइबल सोसाइटीज़. तो वही है कि भाई बार्टर सिस्टम में ले-वेच करते रहो और वहीं से सब चीज़ें चलती रही. So that's what the ancient tribal societies focused on. Now, as agricultural skills developed, more entrepreneurial opportunities arose, leading to specialized tasks like crafting jewelry, making weapons, and creating tools for farming. तो वही है कि भाई रोटी कपड़ा मकान हो गया, उसके बाद क्या करना. बीवी के लिए गर्लफ्रेंड के लिए ज्वेलरी चाहिए होती है, तो ज्वेलरी बना लिए. फिर मेकिंग वेपन्स, अटैक करना है, दूसरे की लैंड चाहिए तो क्या करेंगे, वेपन्स बनाओ और मारो, मार काट करो. फिर आ जाता है क्रिएटिंग फूड फॉर फार्मिंग. खाना खाएगा ना इंसान, भूखे तो नहीं रह सकता, तो फार्मिंग करने के लिए टूल्स चाहिए. देन the action of this goods marked the birth of entrepreneurship, evolving over time as trade become more sophisticated over the time. So this is what happened entirely. Now, as towns and cities emerged, people not only traded locally but also traveled to different places to acquire diverse goods. तो वही है कि भाई भूखा नंगा आदमी क्या करेगा भाई, जब खुद की जमीन में कुछ उग नहीं रहा है तो क्या करेगा, जाएगा बाहर, जाएगा और कहीं से खाना इकट्ठा करना शुरू करेगा. So this is what
things happen. Now, various modes of transportation, such as horses and ships, facilitated this movement, fostering the growth of entrepreneurship. If horse and ships, they are very pivotal, journey, इस journey में, बहुत pivotal role उन लोगों ने किया, because horse and ships are a good, means of transportation, and उससे बहुत चीजें, sorted हो गई. फिर communities established markets and traders established regular trade routes over land and sea between the commercial hubs. तो ये सब चीजें होना शुरू हो गई. The history of entrepreneurship begin with bartering. तो वही है, we have studied this history के barter से शुरू हुआ था. पर कुछ वो एक्सटेंड डायरेक्टली, हाँ भाई तेरे पास वीट है, मेरे पास सोना है, चल लेके चला जा. बट एज वी नो ऑल नो के बार्टर सिस्टम में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और हैड लिमिटेशंस, प्रॉम्प्टिंग द इन्वेंशन ऑफ मनी, के उससे, मनी का इन्वेंशन आना शुरू हो गया. नाउ, monetary systems provided an objective way to value items, evolving from rocks and shells to precious metals like gold. तो पहले तो, ओशन में बैठे हुए, कुछ मिल जाए, रॉक्स मिल गए ऐसा शेप का, या फिर शेल्स मिल गए ऐसा कुछ, शेप के कुछ ना कुछ मिल गया. बट नाउ इट गॉट रिप्लेस विद मेटल एंड गोल्ड कॉइन्स, के भाई गोल्ड कॉइन्स जितने हैं. फिर banks emerge as secure places to the store money. तो वही चीज, there's the entire history of the entire thing. Now, the Industrial Revolution, often associated with the shift from agriculture to industry, marked a period of significant manufacturing advancements and rapid social and economic change. कि भाई मैन्युफैक्चरिंग तो करना पड़ेगा, कोई भी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग के बिना, इट कैन नॉट सर्वाइव. अगर आज चाइना भी देखो, तो चाइना बड़ा इसलिए हुआ बिकॉज, यूएस आउटसोर्स इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू, चाइना. तभी वो इतना बड़ा बन सका, कि मैन्युफैक्चरिंग तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे. मैन्युफैक्चरिंग के बिना, इट्स नॉट वेरी मच good to have a society. So if trade routes and money development ignited entrepreneurship, the industrial revolutions added the momentum. तो वही है कि भाई पहला, रोटी कपड़ा मकान आ गया. अब क्या होगा कि भाई कुछ नई चीजें करनी पड़ेगी. सो वही है कि मोमेंटम ही क्रिएट किया. Now, entrepreneurs played a crucial role in driving innovation during the first industrial revolution and subsequent ones. वो तो है ना, ही है भाई, वही करेंगे. Now, where inventions propelled the industrial age, enabling companies to scale production and achieve exponential efficiency gains. Products that once took days or weeks to manufacture could now be produced in a matter of hours और मिनट्स. दैट्स व्हाट हैपन यार. प्रोडक्ट्स, जल्दी बनना शुरू हो गए. सर्विसेज, जो भी होनी थी, वो स्टार्ट गेटिंग, फाइनलाइज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड वही चीज़ है, बहुत सॉर्टेड वे में, ग्रो होना शुरू हो गई. नाउ, मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ? सो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. अब ये कहाँ से मूव हुआ, क्यों मूव हुआ? द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन occurred in the late 18th century and early 19th century. Primary innovations were machines that reduce the need for human labor, enabling the rise of first factories. कि भाई ह्यूमन लेबर को अपने को, कम करना है. पहला तो वही था. फर्स्ट पॉइंट वाज ह्यूमन लेबर कैसे कम करें. और वही, चीज फर्स्ट फैक्ट्रीज को ले डाउन करने में, हेल्पफुल हुई. देन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल and the invention of the steam engine during this period also led to the proliferation of railroads around the world, accelerating the trade. तो ये दो चीज, कि कोल एंड स्टीम इंजन, इट्स अ गुड फॉर्म, के वहीं से, एनर्जी ट्रांसफर हुई, और वहीं से, चीजें बनना शुरू होगी. नाउ, एंटरप्रेन्योर्स रेज मनी टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ द फर्स्ट रेलरोड्स, built early factories and developed some of the first mass produced textiles. टेक्सटाइल क्यों आया पहले? कुछ भी बना सकते हैं ना यार, गाड़ी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बट टेक्सटाइल क्यों बनाया? बट इफ यू सी, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, मैस्लो की हायरार्की. रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, सॉर्टेड है, वही वही, हमेशा फॉलो होगी, कि रोटी कपड़ा और मकान. तो रोटी तो, एग्रीकल्चर से सॉर्टेड हो चुकी थी, तो अब नेक्स्ट क्या होना था? तो कपड़ा ही होना था. दैट्स व्हाई, टेक्सटाइल वाज, इन्वेंटेड. एंड उसके बाद क्या शुरू हुआ? मकान बनाना. या फिर उसके बाद तो फिर, इट्स अ रेस, के उसके बाद की गेम जो है, रोटी कपड़ा मकान के बाद की गेम तो, इट्स इनफाइनाइट, कि आप कुछ भी बना देते हो. बट दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि रोटी बनाई पहले, फिर कपड़ा टेक्सटाइल्स आया, और फिर, रेसिडेंशियल और, बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई. एंड, आई, समटाइम्स सजेस्ट कि मकान पहले आ गया था, फिर रोटी और कपड़ा आया. बिकॉज, व्हेन यू सेटल, देन यू नीड रोटी एंड कपड़ा. बट वही है कि ये गेम चलती रहती है, रोटी कपड़ा और मकान की. एंड उसके बाद की तो जितनी भी नीड्स है, अब इनफाइनाइट है. अब इसके बाद जो शुरू होगा, वो फिर इनफाइनाइट गेम वाली गेम है. सो द सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल. इफ यू सी, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आज वॉर हो रहा है. समझो कि जो इंडस्ट्रियल सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके वजह से, दिस वॉर इज हैपनिंग राइट नाउ. So the second industrial revolution, which started in the 1870s, was defined by the use of new energy resources, including electricity, gas, and oil, along with the mass production of steel and iron. तो ये जो तीन चीज है ना यार, यही, हर एक फसाद की जंग, वो बोल सकते हैं ना, फसाद की जंग है. तो वही है. नाउ, एडवांसेस इन टेलीकम्युनिकेशन, chiefly the telegraph, allowed ideas to spread quickly and open the door of the beginning of the globalization. कि भाई जब टेलीग्राफ आया, तो ग्लोबलाइजेशन साथ साथ में शुरू होगा. दिस इज हाउ द एंटायर सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपन.
फिर थर्ड है द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल आल्सो मेड द सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्सेप्शनली सिग्निफिकेंट। कि जो ऑटोमोबाइल आया तब तो इट जस्ट बूम्ड इट आउट। सम से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नाउ एंटरप्रेन्योर्स इन दिस एरा accumulated considerable wealth by mass producing everything from railroads to Model T's car। तो अब तो हाँ, मैंने जैसे बोला कि अब तो इनफाइनाइट रेस शुरू हो गए। रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड हो गया, उसके बाद तो बनाओ जो भी बनाना है, वो तो देयर आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ थिंग्स दैट कैन बी मेड। नाउ द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया वर Dhawarkar Tagore, Jamsetjee Newonji, Tata Seth, Hukumchand। The industries in India were established in the 19th century by businessmen who earned fortunes through trading activity। तो वो तो वही होगा कि भाई धंधा करेंगे तो पैसा कमाएंगे, चुटकी बात है ना। द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट एंड न्यूक्लियर एनर्जी। सो द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द लेट 1960s and extended for 50 years period। This revolution was characterized by computers and electronics, the rise of the internet and the advent of the nuclear energy। तो वही हुआ, कंप्यूटर्स आए, इलेक्ट्रॉनिक्स आए, न्यूक्लियर एनर्जी आए, started बहुत सारी चीजें स्प्रेड होना शुरू हो गई। So in this period entrepreneurs invented digital technology and then started global businesses to sell it to the masses। वही है डॉट कॉम बबल के डॉट कॉम सब चीज का डॉट कॉम बना दिया एंड बेचना शुरू कर दिया। बट इफ यू सी डॉट कॉम बबल में से भी 99% फेल ही हुआ था। 99.99% फेल हुआ था। वो जो अभी भी बकर आ है वो 0.1% ही है। बाकी जो जितने भी बकर मचाई थी वो सब खत्म ही हो गए। दैट्स व्हाट इज the startup world is। The third industrial revolution includes, for example, the invention of mobile phones, computers, and the launch of the social media। तो ये सब चीजें शुरू हो गई। Now, fourth industrial revolution जिसमें अपन अभी जी रहे हैं, AI करते रहे। So, interconnected technologies and renewable energy। The fourth industrial revolution is ongoing। We are living in it। This revolution will be defined by the connected devices, digital transformation and data analytics, artificial intelligence and machine learning। बहुत सारी चीजें हैं। देखो कनेक्टेड डिवाइस आ गए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, डेटा एनालिटिक्स आ गई, आर्टिफिशियल एआई आएगा, मशीन लर्निंग आएगी। यार कितनी चीजें एक साथ एज आई सेड, एक बार रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड हो गया ना, फिर तो द ह्यूमन बीइंग इज सच अ हाँ सच अ एनिमल कि वो तो फिर भागेगा कुछ कुछ भी चीज के लिए। द फोकस इज आल्सो ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एज कंपनीज लुक फॉर वेज टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड स्लो ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, सबको पता है कितना रिन्यूएबल एनर्जीज ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में हम कंपनीज वर्क करती है। ये सब मीडिया के लिए नैरेटिव सेट करने के लिए अच्छी लिखती है, बट रियलिटी में सबको पता है कि व्हाट्स द थिंग बियॉन्ड दिस थिंग, बियॉन्ड नंबर्स और सेल्स के बाद क्या क्या चीजें होती है वो सबको पता ही होता है। So entrepreneurs continue to influence this era through their innovations, leveraging emerging technologies to automate far more complex process or create more sustainable business operations। तो वो तो होना ही है। Now, so this was a good history कैसे थी entrepreneurship, evolution कैसा हुआ। Now we will see about the types of entrepreneurship। ये interesting topic है, types of entrepreneurship। So entrepreneurship में several may share several overarching characteristics, but the type of entrepreneur you are or aspire to be could look very different from someone else's perspective and may influence your goals as well as shape the future of your business। Let's discuss the type of entrepreneurs and how their respective priorities and goals create unique business and distinctively affect the customers। Now, पांच टाइप है: इनोवेटिव, इमिटेटिव, सोशल, वुमन एंड कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। जो अपने बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर। नाउ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से होते हैं? सो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट देयर बिजनेस विद द इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू आइडियाज टू मार्केट। वही है, कंप्लीटली न्यू, नया बनाओ, छापना नहीं है, नया कुछ बनाएंगे। दिस पीपल आर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स दैट इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस टू इंप्रूव द कस्टमर्स लाइफ। कि ये लोग कुछ ना कुछ नया 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 करते रहेंगे, जिससे कस्टमर की लाइफ भी मजे मजे करे वो लोग। So they're constantly looking for methods to enhance their goods and services since they are passionate about developing something better and fresh। कि कुछ ना कुछ नया नया बनाते रहेंगे। Always trying and improving, embracing change and utilizing new tools, technologies and strategies। तो ये सब चीजें होनी है। This businessmen frequently develop new markets and make disruptive changes to the business as a consequence of their inventive attitude। Example Intel Microchips, SpaceX, UPI, Zomato। तो ये सब चीजें Intel आ गई, SpaceX अपना आ गया, फिर UPI चीज आ गई एंड Zomato आ गई। तो ये सब दे आर न्यू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू न्यू थिंग्स के भाई क्या क्या नई नई चीजें कर रहे हैं। दे डेवलप अ सेंस ऑफ गुड थिंग कि हाँ भाई मजा आ रही है नई नई चीज बनाने। स्पेस एक्स, एलोन मस्क का यूपीआई इज वन थिंग जो मुझे लगता है बहुत इंडिया ने एक गिफ्ट दिया वर्ल्ड के लिए। एंड यूपीआई हाउ सर्व्ड इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता अगर यूपीआई इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा होता। एंड दैट्स हाउ द एंटायर स्पेस हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स। सो आई गेस दैट्स व्हाट द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स सबको पता ही है। इट्स जस्ट मस्ती से पढ़ते हैं। नाउ let's move forward. Imitative entrepreneurs. So, imitative entrepreneurs are those who follow the successful business model and strategies of other successful business। के जो दूसरे दूसरे लोग कर रहे हैं उसको बैठा कॉपी पेस्ट कर लो, खत्म हुई ना बात। कॉपी पेस्ट कर लो, शांति से करो, एकदम एकदम बढ़िया है। जो चल रहा है यूएस में चल रहा है, बैठा छाप दो यहाँ पे, एकदम बढ़िया मॉडल है वो।
So rather than taking risks and innovating, they look to what has worked in the past and try to replicate it in their own business. तो minimalist करके there's a good startup, या फिर if you can say जो अपना टम्बलर का क्या बोलते थे, उसका नाम भूल गया मैं, अ, वो जग वाला क्या वो उसको बोलते थे, भूल गया, टम्बलर टम्बलर लिख लो। तो वो यूएस में फेमस हुआ, टिकटॉक विकटॉक में, और अब इंडिया में भी वो चीज़ चल रही है, वो क्या बोलते हैं उसका नाम ही भूल गया। चलो ठीक है। गर्ल्स में भी रिमेंबरिंग दैट नेम, बॉयज़ को भी पता हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन में वो क्या बोल रहा हूँ मैं टम्बलर का। सो दे may copy a product, business model, a marketing strategy, or a combination of these elements. Now, immediate entrepreneurs often focus on improving the efficiency and scalability of existing ideas rather than generating new ones. तो वही है कि इमीडिएट तो वही है कि भाई अपने एक बार बन चुका है, तो अब एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी कैसे लाए? तो ये 2 चीज़ आनी चाहिए कि एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी आ रही है कि नहीं, और उसको ग्रो करो, वॉल्यूम में बेचो, क्वालिटी में बेचो। वही होना है कि 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो क्वालिटी वाला माल बेचो, या फिर क्वांटिटी वाला माल बेचो। तो दोनों में से जो भी अच्छा लग रहा है वो बेचना शुरू कर दो। While they may not have the same level of creativity or risk taking as innovative entrepreneurs, they still play an important role in the economy by taking existing ideas and making them accessible to the wider audience. अगर देखो तो ओला, उबर सब कॉपी है, एयरबीएनबी सब कॉपी है। एयरबीएनबी तो ठीक है, इट वाज़ अ न्यू आइडिया, बट ओयो इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉपी ऑफ एयरबीएनबी। तो वही है दैट वो कॉपी ही मारना है। इंडिया को तो इमिटेटिव में ही जाना चाहिए, वो तो इनोवेटिव में तो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है वो तो अब। हाँ, बहुत देर के बाद बनेगी अपने इनोवेटिव में तो। सो एडिशनली दे में ब्रिंग द न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड मेक मॉडिफिकेशन दैट इंप्रूव अपॉन द ओरिजिनल आइडिया। तो वो तो करना ही है, इम्प्रूवमेंट तो करते ही रहना पड़ेगा। वो तो स्टॉप तो होना ही नहीं है। नाउ, moving forward, while not as groundbreaking as innovative entrepreneurship, imitative entrepreneurship can still be a valuable and viable path for those looking to start a business. कि हाँ भाई, अगर इनोवेशन नहीं करना आ रहा है तो ठीक है, ये भी करो, मजा करो। Such entrepreneurs are typically found in developing countries where they mimic innovation in terms of production elements that are already widespread in developing nations. As I said, कि इंडिया तो यही करने वाला है। So compared to innovative entrepreneurs, these entrepreneurs experience less potential risk. Example, भारत पे fintech relied heavy on the business of पेटीएम। तो भारत पे अश्नीर ग्रोवर, एज यू ऑल नो, कि उसने भी वही चीज की थी कि भाई पेटीएम का जो था, बट ही एग्जीक्यूटेड वेल। भले बंदा जैसा भी हो, सब में है, सब में लाइक हिम, सब में डोंट लाइक इट, बट उसने बनाया, मतलब भारत पे बनाने में भी मेहनत लगती है, एंड he created that effort, and he made this entire a big thing. So that's what imitative entrepreneurs are. Now moving forward, social entrepreneurs. So social entrepreneurs कौन होता है? So social entrepreneurs in India are individuals who establish ventures with a primary focus on addressing pressing societal challenges and driving positive social change. तो ये वही है कि social entrepreneurs कौन कौन है, कि भाई जो दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, उनको सोसाइटी में चेंज लाना है, उन लोगों को ऐसा चाहिए कि भाई सोसाइटी इंप्रूव हो, एंड देयर देयर नीड्स टू बी अ गुड। तो पैडमैन जो फिल्म बनी थी, उसमें जो सैनिटरी पैड्स वाला चीज था, या फिर एक्स वाई जेड, नेचर को बचाने के लिए people open entrepreneurships, so people open their businesses. So these are different sort of social entrepreneurs, so motivated by a commitment to uplift marginalized community, addressing environmental issues and addressing cultural and community issues. Indian social entrepreneurs employ innovative strategies to tackle issues such as poverty, education, environment and healthcare. तो ये सब चीजें, पॉवर्टी आ गई, एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ केयर, तो इन चार से दे create a some sort of good business, and इनको दे स्किल इट, कि यही 4 चीज़ है, पॉवर्टी, गरीब इंसान को सोशल एंटरप्रेन्योर्स हेल्प कर लेते हैं। फिर एजुकेशन में मैं भी शायद सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, बिकॉज़ एजुकेशन में कर रहा हूँ कुछ, एनवायरनमेंट है, हेल्थ केयर है। सो दीज़ आर द थिंग्स ऑफ थिंग्स। नाउ एन एग्जाम्पल इज अरुणाचलम मुरुगन who found Jayashree Industries revolutionizing the menstrual hygiene in rural India by creating low cost sanitary napkin। ये शायद पैडमैन की सेम स्टोरी है, आई गेस, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट या जो ही है कि सैनिटरी पैड्स के लिए कर सकते हैं। Another notable example is Anshu Gupta, founder of Gunj, an organization addressing clothing and basic needs in the impoverished रीजन्स। थे वही है कि भाई गुंज ने वही किया था कि भाई क्लोथिंग या फिर बेसिक नीड्स जो कपड़े वपड़े हैं, उनको वहां पे पहुंचा दिया था। दैट्स द थिंग ऑफ सोशल entrepreneurs. Now, operating with a dual mission of social impact and financial sustainability, Indian social entrepreneurs often collaborate with various stakeholders, including government agencies, NPOs, to amplify their influence. तो वही है कि पैसा पैसा तो कमाना पड़ेगा ना भाई, सेवा कितनी कर पाओगे? सेवा भी तभी कर पाओगे जब पैसा होगा, तो पैसे करने के लिए भी सेवा चाहिए। तो यू विल नीड टू कोलैबोरेट, एंड वही चीज़ होनी है। So the success of social entrepreneurs in India lies in their ability to combine business acumen with a deep sense of social responsibility, contributing to a scalable and enduring solutions for the multifaceted challenges faced by this country। तो वही चीज़ वी आर डिस्कसिंग कि पैसा तो कमाना पड़ेगा ना भाई, सेवा इतनी भी नहीं कर सकते सकते कि भाई सब चीज़ ही खत्म हो जाए। बट
उतनी करना कि भाई मज़ा आ जाए। फिर वुमन एंटरप्रेन्योर्स कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स इज़ लास्ट shit 30 40 years में it have grown up women are working in society and women are gaining very much good experience. So considering the vital demographic in the entrepreneurial landscape, women who initiate and lead business ventures contributing significantly to economic growth and innovation. So it said that women entrepreneurs they are good in making things, selling things, and करना चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ कि वुमेन को भी दे शुड कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, दे शुड कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी ग्रोथ। इट्स नॉट फॉर द जीडीपी ग्रोथ बट इट्स फॉर देयर ओन वेल बीइंग, फॉर देयर ओन गुड प्रोसेस, कि घर में बैठे-बैठे कुछ नहीं होना। थोड़ा भी कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी दे आर मेकिंग दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, तो वो उनका भी माइंड डेवलप होता है एंड डेवलपिंग ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस ऑल थिंग्स के पैसा तो ठीक है सेकेंडरी चीज़ है बट माइंड को तो डेवलप करना पड़ेगा ना, घर में बैठे-बैठे क्या माइंड डेवलप हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ मतलब मैं वुमन को वही बोलता हूँ, मेरे जितने आजू-बाजू गर्ल्स और वो सब जितने भी हैं। क्रिएट एनीथिंग, इट्स नॉट कि भाई यही पैसे कमाने के लिए बट जस्ट डोंट सिट, कुछ भी बनाते रहना। बैठ जाओगे तो फिर माइंड डेवलप नहीं होगा एंड वो एक बहुत डेंजरस थिंग है। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। सो इन इंडिया फीमेल एंटरप्रेन्योर्स नेविगेट डाइवर्स सेक्टर्स ब्रेकिंग ट्रेडिशनल बैरियर्स। किरण मजुमदार shaw, founder of Biocon, exemplifies the prowess of Indian female entrepreneurs in the biotechnology industry, transforming into a global power. तो किरण मजुमदार shaw बायोकॉन की फाउंडर, she killed it नायका की फाल्गुनी नायर आई गेस शायद उनका नाम वही है। नायका नायका इज अ गुड स्टार्टअप जो वुमन लेड स्टार्टअप। फिर बिज़नेस अलग मामा अर्थ ले लो। सो दे क्रिएटेड अ गुड मामा अर्थ। फिर ये नमिता थप्पर थापर का अपना एमक्योर ले लो, वो तो ठीक है विरासत में मिला था बट उसने फिर गमीज और वो सब चालू किया। अर्थ अर्थ था क्या फिर ऐसा कुछ नाम है। So that's what women entrepreneurs are all about. So Chitra Ramakrishna, former CEO of the NSE, highlighted leadership in the financial sector. Female entrepreneurs face unique challenges but often excel in fields such as fashion, technology, and social entrepreneurs. तो ये ऐसे बोला फैशन टेक्नोलॉजी सोशल एंटरप्राइज के लिए दैट्स अ गुड। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए दैट्स अ गुड एग्जांपल। शार्क टैंक में शायद फर्स्ट सीजन में बीप करके एक ऐप था एंड देयर वाज अ गुड फाउंडर जिसके साथ मैंने भी आई जस्ट कोलैबोरेटेड बात भी की थी एंड बाद में एंड शी वाज अ गुड उसकी स्टोरी जानना एंड हाउ शी created the entire Beep app and it's growing nice and significantly. So that's good. मतलब women entrepreneurs को encouragement मिलना and it's a good to go things for the society. The success stories such as Falguni Nair, as I said, founder of Nykaa, an e-commerce platform for beauty and wellness, inspire a new generation of women in India to pursue entrepreneurial endeavors, fostering economic inclusivity and diversity. The contribution of female entrepreneurs are pivotal in reshaping India's business landscape and challenging the traditional gender norms, marking a significant stride towards equality and empowerment and diversity. So this was the entire thing. Now, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स तो एंटरप्रेन्योर्स तो ये सब ये भी मस्त चीज है। सो एंटरप्रेन्योर्स आर डायनामिक इंडिविजुअल्स विद इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हु एग्जिबिट एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज एंड बिहेवियर्स टू ड्राइव इनोवेशन एंड पॉजिटिव चेंज। तो इनोवेशन एंड पॉजिटिव चेंज कहाँ से लाएंगे जो खुद की ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ ना कुछ चेंजेस कर करके। सो ऑपरेटिंग एज कैटलिस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, एंटरप्रेन्योर्स possess a unique blend of initiative, risk-taking, and resourcefulness. They actively seek opportunities for improvement and are passionate about implementing creative solutions. For instance, Google's 20% time policy allows employees to dedicate a portion of their work hours to pursue personal projects, fostering an entrepreneurial culture. तो ये गूगल तो भाई मस्त कंपनी है भाई, इतना उतना चीजें देती है ना अपने एम्प्लॉयज के, भाई मजे करते रहो। फिर entrepreneurs navigate the corporate landscape, often collaborating across departments and leveraging existing resources to bring their ideas to the fruition. Companies embracing entrepreneurship benefit from an internal culture of adaptability and long-term vision, contributing to sustained competitiveness and resilience in rapidly. ठीक है। Now, examples of successful entrepreneurial endeavors include the development of the post-it note at 3M and the introduction of AWS within the large Amazon ecosystem. तो Amazon तो बहुत बड़ा था, बट Amazon में भी AWS जो Amazon वेब सर्विस जो एक ह्यूज चंक ऑफ रेवेन्यू है नाउ ऑफ Amazon, वो भी एंटरप्रेन्योर्स खुद की कंपनीज में से ही निकला था। एंड द गुड एग्जांपल अदर इज सुंदर पिचाई, उन्होंने भी गूगल में ही काम किया एंड देन ही गॉट प्रमोटेड टू सीईओ एंड उन्होंने ही यूट्यूब या फिर जीमेल कुछ बनाया था उसमें से ही। सो द unfavorable circumstances for the formation of entrepreneurs, especially creative and path-breaking businesses in underdeveloped economies, like lack of trained workers, business unfriendly environment, coupled with an absence of suitable education, research and development support ecosystem, lack of capital in the immature market, or suboptimal infrastructure facilities, force entrepreneurs to imitate technology and business models created by innovative entrepreneurs in wealthy nations rather than creating their own. तो वही है कि यूएस का बैठा छाप दो इंडिया में, खत्म बात। कि वहां पे जो बनाया है यूएस यूरोप यूके में, वहाँ बैठा ला के छाप दो, खत्म हो गई बात एंड पैसा कमाओ।
But with increased pressure on economies to generate employment, the government across the world, especially countries with immense talent populations and equally promising consumer dynamics, are driving a transformative change in the entrepreneurship ecosystem, marked by dynamic changes that are shaped by the landscape for the startups and innovators. So ये कि कुछ ना कुछ नई नई चीजें करते रहते हैं, जो डेवलप हो रही है. So government initiatives such as Startup India by Government of India and various policy reforms have created a more conducive environment by easing regulatory burdens and providing financial support. तो ये Startup India scheme is a very good scheme. 2016 में launch हुई थी and it was a very good boost to the startup ecosystem. Boost to the मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उसके पहले क्या हो रहा था. So वो रील्स आती रहती है ना कि बिफोर एंड आफ्टर. ये वैसी चीज है. 2016 के पहले क्यों नहीं किया गया. दैट्स द क्वेश्चन मार्क इज कि क्यों नहीं किया गया. ये इतनी बढ़िया चीज है एंड बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड बूस्टिंग द पीपल इज वेरी गुड इन द होल इकोनॉमिक सेंस. नाउ additionally, a surge in digitalization and increased internet penetration has democratized access to resources and markets, empowering entrepreneurs across diverse sectors. तो वही है कि भाई डिजिटलाइजेशन आ गया, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी आ गया, तो ये दोनों चीजें देयर इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स कि इससे बहुत अच्छी चीजें होना शुरू हो गई. नाउ कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री स्ट्रेंथनिंग फॉस्टरिंग रिसर्च ड्रिवन एंड स्टार्टअप्स. ये बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट वी स्टिल नो वी आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, और कितना एकेडमी और इंडस्ट्री कितना मैच हो रही है वो हमको ही पता है. बट वही है, लिखने के लिए बढ़िया लगती है चीजें. नाउ फर्दरमोर द सोसाइटल परसेप्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इवॉल्विंग विद अ ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. वही है कि भाई पहले फेल होता था तो ऐसा लगता है कि भाई क्या स्टार्टअप कर रहा है, क्या ये अब खुद का बना रहा है. बट नाउ पेरेंट्स आर ऑल्सो गुड टू गो कि भाई हाँ बना कुछ ना कुछ सही मिल जाएगा, 3 साल में नहीं होता जॉब कर लेगा कहीं ना कहीं. So the shift reflects a vibrant and evolving entrepreneurial ecosystem, positioning India as a global hub for innovation, job creation, and economic growth. As the ecosystem continues to mature, it holds the promise of unleashing a way of creativity and enterprises that will contribute significantly to India's socio-economic development. Now, just a minute, I just drink water and we can continue again. Now, let's start again. So now we will start about the role of entrepreneurship and startups in the economic development. Economic development, mein, how they are helping or how entrepreneurship is helping. So, entrepreneurship plays a vital role in the economic development of a country like India, contributing to various aspects that drive growth and innovation. Now, entrepreneurship and startups fosters innovation and technological advancement. Entrepreneurs are often the forefront of introducing new ideas, products, and services. In a country as diverse and dynamic as India, innovation is crucial for addressing challenges and creating solutions cater to the unique. Now, India has witnessed a surge in innovative such as the biotech sector. कोई और हॉस्पिटल है, घंटा है वो इनोवेटिव स्टार्टअप्स है, वो तो वही है अपना जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स वाला है वही है. Zomato and food delivery revolutionizing the traditional industries and contributing to the global recognition. तो ये सब चीजें वही हो गई. Now, secondly, entrepreneurship is a significant driver of job creation. India, with its large and growing population, faces substantial employment challenges. Entrepreneurial ventures, especially startups, generate employment opportunities across various sectors. These ventures not only absorb the skilled workforce but also provide avenues for unskilled, contributing to the inclusive economic growth. वही है वो कि भाई skilled and skilled सबको बढ़ावा देती है. Now, companies like Swiggy, Zomato, Ola have not only transformed the food delivery and transportation sectors but have also emerged as the major employers providing opportunities. तो ये है gig workers, पहले कुछ ऐसा होता ही नहीं था क्या gig workers हो या फिर क्या एम्प्लॉयमेंट इन लोगों को क्या कौन एम्प्लॉयमेंट देगा. बट स्विगी जोमेटो ओला उन लोगों ने दे गेव recognition of gig workers and they started earning good from doing the gig works and this thing. Now, in addition, startups contribute significantly to the wealth creation. The success stories of Indian startups such as Flipkart and Grow have not only generated substantial wealth for the founders and investors, but have also inspired a new generation of the entrepreneurs. तो ये बहुत बढ़िया है. Flipkart, Grow. I like those startups. मतलब they grow eventually very well and बहुत बढ़िया सी चीज बना दी. And Grow का if want a detailed analysis कि Grow क्या कर रहा है, Grow कैसे grow हुआ. So you can watch Parth Verma sir ka there's a good lecture about how Grow is not just a broking platform but it's just it's an entire financial ecosystem platform. तो ये एक बहुत बढ़िया वीडियो था which I saw and I recommend it saying मतलब it is a 50-minute video but you will learn a lot कि भाई क्या चीजें चल रही है, ग्रो क्यों ऐसा इस तरह से ग्रो हो रहा है. फ्लिपकार्ट a good story, a good everyone have read it but that's a Walmart, Flipkart. The first startup I researched about was Walmart, which is a parent company. वो मैंने शायद 11th स्टैंडर्ड में रिसर्च 11 हाँ 11th स्टैंडर्ड में आई रिसर्च अबाउट वॉलमार्ट.
एंड वो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप हाउ इट इज, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 11 11 स्टैंडर्ड, इट्स 8 7 8 years, and now doing this, it's a good thing. Now, from a broad economic viewpoint, entrepreneurship enhances economic competitiveness and diversification. तो वही है, economic competitiveness and diversification चलनी चाहिए. Entrepreneurs establish and grow their business to contribute to the overall productivity and efficiency of the company. वही है, देखो ज्ञान रिपीट होना है इसमें, इतना लिमिटेड ज्ञान है, बट स्ट्रेच करा जा रहा है वो, आपको भी दिखेगा, मुझे भी पता है, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं. नाउ दिस इन टर्न boosts the country's competitiveness on a global scale, attracting investments and creating a favorable business environment. This inherently helps reduce dependency on a few sectors, making the economy more resilient to the external shock. Now, entrepreneurship and startups in developing economies. तो वो क्या है? So I believe that entrepreneurship is the most ये बराक ओबामा ने बोला था कि I believe that entrepreneurship is the most reliable path to economic independence and sustainability. It empowers individuals to shape their own destinies, and in doing so, contributes to the prosperity and progress of the entire nation. दैट्स इट कि भाई मोस्ट रिलायबल पाथ है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सिस्टम, ठीक है, ये ज्ञान दिया है सबको ज्ञान देना बहुत मजा आती है, मुझे भी मजा आती है, तो मैं भी दे रहा हूँ. बट ठीक है, इट्स अ गुड कि बराक ओबामा ने भी ये सेंटेंस बोला था. ना मूविंग फॉरवर्ड, तो क्या क्या चीजें देता है एंटरप्रेन्योर या फिर ये स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, वही पॉइंट्स रिपीट होगा. सो एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन. फिर ग्लोबली recognized examples include Silicon Valley in the US, characterized by a multitude of startups and tech giants such as Apple and Google. तो Silicon Valley से ये चीजें आई थी. फिर in India, the success of startups like Flipkart and Zomato exemplifies the transformative impact of entrepreneurial ventures. ठीक है. फिर second, job creation करती है, तो वो तो करनी है. The entrepreneurial ventures are instrumental in job creation, a pivotal factor for developing a nation's workforce. Globally, the success of Uber and Airbnb has demonstrated how disruptive entrepreneurship can generate employment opportunities. वही है, employment तो करेगा. Locally, Indian startups like Ola and Swiggy have emerged, वही बात की, showcasing the employment potentials inherent. फिर third point आ जाता है technological advancement in global competitiveness. Entrepreneurship facilitates the adoption of advanced technologies, contributing to global competitiveness internationally. China's tech ecosystem, including companies like Alibaba, Tencent, illustrates how entrepreneurial endeavors drive technological innovation. In India, the emergence of tech startups like Paytm and Razorpay underscores the role of entrepreneurship in enhancing the global competitiveness. तो ठीक है, ये आ गया. फिर fourth है diversification of the economy. Entrepreneurship plays a pivotal role in diversifying, reducing reliance on specific sectors. Globally, the economic diversification in Singapore, fueled by a robust entrepreneurial ecosystem, serves a paradigm. So yeah, Singapore, it's a good example कि भाई diversification of economy हुई, they got the enter financial sector in them, and वहीं से they grew in a good manner. In India, the growth of renewable energy startups like Renew Power signifies the potential for entrepreneurial innovative initiatives to diversify the economy. तो ये बहुत है, renewable energy या फिर solar का या फिर drones का, फिर समझ लो कुछ और satellites का. These are new avenues that are opening, and people are making good sorts of money in this sort of fields. Now, फिफ्थ आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. एफडीआई तो आएगा, पैसा जहाँ पे ग्रोथ दिख रही है. जो मैं एफडीआई को आई कंसिडर इट एज ट्रांसनेशनल कैपिटल. तो ट्रांसनेशनल कैपिटल तो जहाँ पे भी पैसा बनने की हाँ चूल मिलती है, वहां पे चला जाता है. सो इट्स नॉट, वो ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे मेरे को इंडिया बहुत पसंद है, मैं इंडिया में डालूंगा. नो, इट डजेंट मैटर. ट्रांसनेशनल कैपिटल को कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहां पे दे अर्न द मनी. ट्रांसनेशनल कैपिटल का व्हाट इज द मेन बिजनेस, इफ यू नो, the main business of them is war. वॉर करवाओ, जैसे इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुआ है, या फिर बिल्डिंग्स तबाह हो जाए, एंड फिर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके ही पैसे लगे. सो ट्रांसनेशनल कैपिटल का सबसे बड़ा धंधा वॉर है, समझ लो. ये जो वॉर हो रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसनेशनल कैपिटल, जिसको जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मॉरल्स एंड वैल्यूज से. सो थ्राइविंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सिलिकॉन वैलीज ग्लोबल अपील हैज अट्रैक्टेड सब्सटेंशियल एफडीआई. In the Indian context, Bengaluru has become the tech hub of the country, and the success of fintech startups like Paytm has garnered international attention. Foreign investments showcasing the significance of entrepreneurship and attracting the global capital. तो आएगा, ग्रोथ दिख रही होगी तो क्यों नहीं आएगा, पैसा बनाने को तो सबको चाहिए. तो उनको भी ग्रोथ दिख रही हो इंडिया में, तो आते हैं. Now, sixth, social impact and inclusive development. Now, entrepreneurs can address जो social entrepreneurs अपने बात की, and contribute to the inclusive development. Globally, the initiatives like Tom's Shoes exemplify the social entrepreneurship. In India, the impact of ventures like Arvind Eye Care, providing affordable eye care solutions, demonstrates how entrepreneurship can create a positive social change and contribute to the inclusive development. तो Arvind Eye Care, it's a great product कि जिन्होंने आई सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीजें की.
to create a good social impact and inclusive development. India has seen a steady increase in FDI inflow in startup ecosystem over the years. Key areas including e-commerce, fintech, health tech, renewable energy. तो ये बहुत it's called as trends. मतलब हर हर 3-4 साल में ट्रेंड्स बदलते हैं. पहले ई कॉमर्स था, फिर फिनटेक आया, फिर हेल्थ टेक आया, फिर नाउ इट्स मोर अबाउट रिन्यूएबल एनर्जीज. तो ये ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, ट्रेंड्स गो एंड कम. तो ये चलती चलती रहती है. So several high-profile funding rounds and investments from global venture capitals, private equity funds, and strategic investors have been reported. To get the most accurate and up-to-date detail, one may refer to the official. ठीक है, ये ज्ञानबाजी की है. Now, तो यही चीजें आ गई. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, फिर जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, एफडीआई आ गया, एंड लास्ट में सोशल इम्पैक्ट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की. वी हैव डिस्कस्ड द entire discussion about the things. Now, rise of startups, global perspective. Like globally, how the startups are rising. So, in the realm of startups, the United States stands out as a leader despite having a smaller population compared to China and India. Yeah, so, it's a very stated fact. कि USA, have been driven by innovation. They have produced so much. They have produced very good amount of things. So, वो तो होना ही है. But remarkably, the US not only maintains its first place position in total startup output, but does so with exceptional strength. कि US, have focused on knowledge, have focused on innovation, तो उससे they have grown. मतलब it have become a unipolar world जहाँ पे यूएस के अलावा कुछ चल ही नहीं सकता. यूएस होगा तो ही दुनिया की चीजें चलेगी. That's what have happened over the entire period of time. This achievement emphasizes the robust nature of the US startup economy, outperforming both China and India, even though these countries have a larger population. क्या भाई, you know गाडरियो प्रवाह होने की ज़रूरत नहीं है. एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. मैं ऐसा समझता हूँ कि गाडरिया प्रवाह की तरह कुछ ना कुछ करते रहो, उससे कुछ नहीं होना. सो दैट्स द थिंग कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो क्या हो गया? An interesting factor to take into account is the adjustment of rankings based on the population size. When considering this, the US score is nearly 4 times higher than that of the second ranked country. समझ लो, यूएस 4 गुना आगे है अभी दुनिया से, कुछ भी कर ले अपने. So this highlights the undeniable dominance of the US in the startup landscape. In simple terms, the US is way ahead of other nations in producing startups, showcasing its impressive entrepreneurial prowess. Now, even though China and India share a similar population size, China's total startup output score is nearly twice as high as that of India. क्या इंडिया चाइना की भी जो लड़ाई होती रहती है उसमें चाइना बहुत आगे है. वी कैन नॉट फाइट दैट थिंग आल्सो, क्योंकि नो चाइना इज अ प्रॉक्सी ऑफ यूएसए. वैसी चीज है. ये चाइना एग्जिस्ट में है बिकॉज़ यूएस एग्जिस्ट्स. तो यूएस ने क्रिएट किया तो चाइना कभी खत्म हो ही नहीं सकता. वैसी चीज़ है, अपने जितना भी जोर-दम लगा दे. So that's the thing. So this clear difference underscores China's strong and thriving startup environment, showcasing its remarkable ability to foster a greater volume of entrepreneurial activity compared to India. Now, both China and India have the potential to climb higher in global rankings by boosting their total startup output, aligning it more closely with their substantial populations. In essence, by nurturing more startups, these countries can make better use of their large populations to enhance their standing on the global entrepreneurial stage. Now, in the global perspective, startups represent dynamic hubs of innovation and entrepreneurship, driving economic growth and technological advancement. तो ये चीज वहां पे शुरू होना चालू हो गए. Now, startups have instilled a proactive and risk-taking mindset among young individuals, encouraging them to embrace challenges and pursue unconventional paths in the businesses. The startup culture promotes innovation, fostering a belief that disruptive ideas can lead to success. This has shifted the paradigm from conventional career aspirations to a more entrepreneurial output, inspiring young people to create their ventures. Startups emphasize agility and adaptability, teaching young entrepreneurs to navigate a rapidly changing business landscape with the resilience. The success stories of young startup founders have become powerful motivators, challenging traditional notions and showcasing the viability of pursuing one's entrepreneurial mindset. तो वही है कि ज्ञान सबको पता है क्या क्या चीजें हैं. Now, दिस आर गुड स्टार्टअप्स के भाई क्या क्या दुनिया में चल रही है चीजें. सो ग्लोबल स्टार्टअप्स क्या कौन कौन से हैं, फिर इंडियन स्टार्टअप्स देख लेंगे. नाउ ग्लोबल स्टार्टअप्स, पहला तो है अपना टेस्ला बाय इलॉन मस्क. So Tesla, founded by Elon Musk, has emerged as a pioneer in sustainable transportation and energy solutions. तो दो चीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सॉल्यूशंस, बूस्टिंग वैल्यूएशन सरपासिंग 800 बिलियन. तो अब टेस्ला का तो इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट के भाई ईवी में पहला पहला चीज था. सो मस्क इनोवेटिव विजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, cutting edge battery technology and advancements in autonomous driving. Tesla's business strategy revolves around vertical integration, ensuring control over the entire production process and a direct to consumer sales model, positioning the company as a leader in the global EV market. तो अगर देखो तो टेस्ला की बिजनेस स्ट्रेटजी कौन कौन से पैरामीटर्स पे थी. फर्स्ट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन उन्होंने किया. एंटायर प्रोडक्शन लाइन को पूरा ही कंट्रोल कर दिया. डी टू सी सेल्स उन्होंने कर दी. तो ये तीन से क्या हुआ कि दे स्टार्टेड गेटिंग आउट एज अ लीडर इन द ग्लोबल ईवी मार्केट. तो ये पूरी चीज हुई अपनी
टेस्ला भाई की, इलॉन मस्क भाई की। फिर आया उबर। उबर फाउंडेड इन 2009, को-फाउंडेड बाय ट्रेविस कैलेनिक एंड गैरेट कैम, ठीक है। उबर हैज़ disrupted the traditional transportation industry with a valuation exceeding 70 billion, ठीक है। The company's technology connects riders with drivers through a user-friendly mobile app, revolutionizing the taxi and ride-sharing industry. We all know. Now, Uber's business strategy focusing on rapid expansion, diversification into services like Uber Eats, and a platform-centric approach allowing for continuous innovation in urban mobility। तो ये चीज़ हो गई अपनी उबर भैया की। फिर आ जाता है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी फाउंडेड इन 2008, ब्रायन चेस्की एंड नेथन ब्लैस्केसी एंड जो गैबिन co-founded Airbnb, transforming the hospitality industry with a valuation exceeding 100 billion. Airbnb's platform enables users to rent lodging and unique travel experiences. The business strategy involves disrupting traditional hotel accommodation, emphasizing personalized and local travel experiences, and expanding into the related services like Airbnb experiences। तो क्या-क्या चीज़ें Airbnb ने की? So उन्होंने इन्वॉल्विंग डिस्टर्बिंग ट्रेडिशनल होटल डिस्ट्रप्शंस इन ट्रेडिशनल होटल अकोमोडेशंस कर दिए, पहला तो वो हो गया। फिर सेकंड पॉइंट उनका क्या है कि एम्फसाइजिंग पर्सनलाइज्ड एंड लोकल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, एंड लास्ट में आ गया रिलेटेड सर्विसेज में ही एक्सपांड कर दिया। सो दिस आर द गुड पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड कि भाई कैसे ग्रो करनी है चीजें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड तो स्ट्राइप आ गया। एज आई सेड, ब्रदर्स पैट्रिक एंड जॉन कॉलिंसन फाउंडेड स्ट्राइप, अ फिनटेक स्टार्टअप वैल्यूड एट 100 बिलियन। स्ट्राइप्स टेक्नोलॉजी simplifies online payment processes for businesses, providing secure and efficient payment solutions. The business strategy centers around developer-friendly tools, enabling seamless integration for e-commerce, subscription and mobile payments। तो वही अपना रेजर पे वैसा वहाँ पे स्ट्राइप है। फिर पैलेंटर, तो पैलेंटर तो अगर आप थिंक स्कूल का एक वीडियो देखोगे अभी शायद 2 महीने पहले, एक आध महीने पहले ही डाला था। पैलेंटर का पूरी स्टोरी पता चल जाएगी दैट व्हाट डिड पैलेंटर डू, एंड वो कैसे यूएस नेवी के साथ, यूएस नेवी नहीं, यूएस आर्मी के साथ हाउ इट इज इंटीग्रेटेड। तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स स्कूल का पैलेंटर डाल देना, एंड यू विल गेट a lot of insights about how Palantir grow, and that's what the thing। So Palantir technology पीटर थिल, तो ये पीटर थिल कौन बाबा है? तो पीटर थिल ये पेपर माफिया था ना, उसका ही एक नौजवान इंसान है पीटर थिल। एंड created a good amounts of startups, Alex Cap and other। Palantir has become a leader in data analytics and intelligent software valued at over $40 billion। Palantir's technology assists government agencies and businesses in making data-driven decisions। The business strategy involves big data analysis, aiding organizations in enhancing the decision making process and ensuring national security। तो ये यूएस गवर्नमेंट का पूरा डेटा एनालिसिस करता है, यूएस आर्मी का करता है, एंड इट्स अ इट्स अ वेरी ग्रेट स्टार्टअप। मतलब उनका कुछ अलग ही चल रहा है। फिर तो स्पेसएक्स, उसको तो मार्स पे ही जाना है। इलॉन मस्क बाबा हैज रिडिफाइंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन विद अ वैल्यूएशन एक्सीडिंग 100 बिलियन। तो अगर स्पेसएक्स का आईपीओ भी आ रहा है, एंड इफ यू वांट टू सी द स्पेसएक्स का आईपीओ, तो अश्वथ दामोदरन सर का देयर इज अ गुड वीडियो देयर इज देयर ऑन यूट्यूब। ही हैव टॉक्ड एंटायर के भाई इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालनी है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्पेसएक्स की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। सो स्पेसएक्स टेक्नोलॉजी includes reusable rocket systems and spacecraft, significantly reducing the cost of space travel। The business strategy revolves around fostering commercial space exploration, reducing space travel costs, and working towards enabling human colonization of Mars। कि उसको तो मार्स पे ही जाना है, एंड मार्स पे ही जाके सेटल आउट होना है। फिर अपना जूम आ गया। इराक वन, ठीक है। द बिजनेस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स फैसिलिटेटिंग रिमोट वर्क, वर्चुअल कोलैबोरेशन एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस। फिर अपना स्नैपचैट। स्नैपचैट तो बहुत बढ़िया बना दिया था भाई, फ़िल्टर विल्टर बीच में तो बहुत बढ़िया। अब ठीक है, अब बहुत कम यूज़ करते हैं आई गेस, पता नहीं अब करते भी हो जेन ज़ीज़, एंड यू गाइस आर जेन ज़ीज़, करते भी हो, बट ठीक है। स्नैप टेक्नोलॉजी फोकस ऑन मल्टीमीडिया मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया, कैटरिंग प्रीडोमिनेंटली टू यंगर डेमोग्राफिक्स। The business strategy revolves around innovative features, augmented reality experience, and maintaining engagement through a dynamic social media platform। तो वही स्नैपचैट तो वही हो गया। फिर डोर डैश अपना डिलीवरी या फिर ऐसा कुछ समझ लो। सो Tony Zhu, Andy Fang, and Stanley with DoorDash, a food delivery startup valued at over 70 billion। DoorDash technology connects users with local food delivery services, simplifying the process of ordering food online। तो अपना Zomato है, वही अपना वहाँ का DoorDash। The business strategy involves expanding its delivery network, forming partnership with restaurants, and leveraging technology to enhance the customer experience। तो ये सब चीजें एक साथ में केटर होके आ जाती है। नाउ डीडी showing a Chinese ride hailing agent, 60 billion।
समझो ओला उबर के जैसे प्लेटफॉर्म 60 बिलियन, दे आर dominating the world. Diddy's technology competes with Uber in the ride-sharing market, providing extensive transportation services. The business strategy includes dominating the Chinese market, expanding globally through strategic partnerships and acquisitions, and integrating additional services like bike sharing and autonomous. तो यहाँ पे रैपिडो इंटीग्रेट कर दो वैसी चीज बता रहे हैं वो लोग। अब अपने इंडियन स्टार्टअप्स देखते हैं। सो इंडियन स्टार्टअप्स हैव इमर्ज्ड एज अ वाइब्रेंट कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप, highlighting innovation, resilience, and adaptability. In recent years, India has witnessed a surge in startup activity across diverse sectors, including technology, healthcare, e-commerce, and renewable energy. Cities like Bangalore, often referred to as the Silicon Valley of India, have become hubs for tech innovation, housing numerous startups and tech giants alike. So the Indian government has also played a pivotal role in fostering startup ecosystem through initiatives such as Startup India, Adult Mission Scheme, aimed at providing financial support, mentorship, and easing the regulatory processes. Notable success stories include Flipkart, an e-commerce giant, and Paytm, a fintech powerhouse, both making it sustainable. तो वही अब इंडियन स्टार्टअप्स की बात शुरू होगी. So moreover, Indian startups have shown a remarkable ability, the ज्ञान चलना ही है, to address local challenges such as affordable healthcare solutions, agricultural innovation, and sustainable energy initiatives. The success of these ventures not only contributes to economic growth but also reflects the entrepreneurial spirit and ingenuity prevalent in the Indian startup ecosystem. As India continues to nurture and support the startups, the nation's role in shaping the global entrepreneurial landscape is poised to grow even more significant. अब पहला स्टार्टअप आ गया फ्लिपकार्ट। सचिन बंसल, बेनी बंसल, फ्लिपकार्ट इज पावरिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, वैल्यूएशन सरपासिंग 37 बिलियन, रिवोल्यूशन ऑनलाइन रिटेल, इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस लाइक कैश ऑन डिलीवरी, रोबस्ट कोऑर्डिनेशन। अगर आप देखो इंडिया की माइंडसेट यही है, उन्हीं है सीओडी। मैं भी खुद भी सीओडी वाला ही हूँ कि भाई क्रेडिट कार्ड से क्यों पेमेंट करिए, पे कैश पड़ा है ना कि सीओडी कर दो, खत्म हुआ। आगे माल मिलेगा तभी पैसे देंगे। Business strategy involved aggressive expansion, strategic acquisitions, Myntra को acquire किया and focusing on customer-centric approaches, leading to its acquisition by Walmart. As I said, Walmart मेरी first research company थी, जिसको मैंने research किया था, and this is how the entire thing got developed. That is the Indian entrepreneurs, and it's of Flipkart. Just a minute, I just take a water break. Now moving forward, Paytm. So Vijay Shekhar Sharma founded Paytm, fintech giant, $16 billion मोबाइल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म एंड एक्सपांडेड इनटू डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो वही एक मोबाइल पेमेंट का ऐप था पहला, पेटीएम। तो इट वाज अ फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ ऐप। द बिजनेस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स ऑफरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ सर्विसेज, प्रमोटिंग एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये वही होता है, पता है कि एक बार ग्रोथ हिट नहीं होती ना, तो उसके बाद आईपीओ ला देता है, फिर ग्रोथ तो कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। अब ग्रोथ कहाँ से लाए, तो यही चीजें सब करनी पड़ती है। एंड दैट्स व्हाट दिस एंटायर डोमेन ऑफ पेटीएम हैपेंड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओला, ओला की बात करें। Ola founded in Bhavish Agarwal and Ankit Bhatti founded Ola, a ride-hailing service valued at over $6 billion. Ola's technology disrupted traditional transportation, introducing app-based cab services. The business strategy involves continuous innovation, strategic partnerships, and diversification into the electric vehicles and other mobility solutions. Just a minute, I just ये व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते रह रहे हैं, अब नहीं आएंगे। नाउ इट्स डन, लिस्टेड।